कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। દેશમાં લોકસભાના સત્રના છઠ્ઠા દિવસે એનડીએ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન એકબીજાની સામે જોવા મળ્યા। આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપની વચ્ચે ખડગેની એક શાયરી યાદ કરતા સમાચાર આપવા છે। આજે ખડગે સદનમાં કહ્યું, કભી ઘમંડ મત કરના, તકદીર બદલતી રહેતી है, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। आ છે કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના શબ્દો જે તેમણે સદનમાં આજે ઉચ્ચાર્યા હતા। વિગતવાર વાત કરીએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઊભા થઈ ગયા એવું રાહુલ ગાંધી શું બોલ્યા? વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા। નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકસભાના સત્રના છઠ્ઠા દિવસે લોકસભાના સદનમાં હોહલ્લો, હંગામો અને રાહુલ ગાંધીના પ્રહારો સત્તા પક્ષ પર જોવા મળ્યા। આજે રાહુલ ગાંધી ઊભા થઈને બોલી રહ્યા હતા, દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ વચ્ચે ઊભા થઈ અને બોલવું પડ્યું, વળતો પ્રહાર કરવો પડ્યો। તેમના પ્રહારમાં હિન્દુત્વ હતું। વિગતે વાત કરતા પહેલા મલ્લિકાર્જુન ખડગેની વાત કરીએ। સદનમાં આજે ખડગે બોલ્યા કે અમને ઘમંડી ઈંડી ગઠબંધન તરીકે ઓળખાવતા હતા, અમને તમે ગઠબંધનમાં ઘમંડી ગઠબંધન તરીકે કહેતા હતા, પરંતુ ઘમંડ તો જનતાએ ઉતાર્યું છે તમારું। शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़े। રાહુલ ગાંધીની વાત કરીએ, અમિત શાહની વાત કરીએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પણ વાત કરીએ। આજે રાહુલ ગાંધી ઊભા થયા અને ઊભા થતાની સાથે જ સત્તા પક્ષ દ્વારા નારા પોકારવામાં આવ્યા સદનમાં, ભારત માતા કી જય, મોદી મોદી અને મોદી। સત્તા પક્ષ તરફથી થઈ રહેલા નારાની સામે રાહુલે એક સ્મિત આપ્યું અને હસતા હસતા કહ્યું, જય સંવિધાન। साथी सांसद पासेथी संविधाननी कॉपी तेमणे हाथमां लीधी। कॉपी बतावता तेमणे कह्युं, आ संविधाननी अमे देश साथे मळी अने रक्षा करवानुं काम कर्युं छे। त्यारे तेमणे सत्ता पक्ष अने एनडीए पर प्रहार करता कह्युं के हवे मने सारुं लागे छे के भारतीय जनता पार्टी अने एनडीएना सांसदो दर 2-3 मिनिटे संविधान संविधान कहेवा लाग्या छे। आ तमाम बाबतोनी वच्चे तेमणे कह्युं के आ सत्ताए 10 वर्ष में सिस्टमेटिक हुमला कर्या, आइडिया ऑफ इंडिया पर हुमला कर्या, बंधारण पर हुमला कर्या, जे सामा थया, जेमणे खिलाफत करी, तेमना पर भारतीय जनता पार्टीए रीतसरना हुमला कर्या। राहुल गांधीनुं आ भाषण तमे सांभळो, तेमां तेओ भगवान शिव साथे गुरु नानक देव साथे यीशु ख्रिस्त सहितना भगवाननी तस्वीरों सदनमा बतावता हता अने आखरे नरेंद्र मोदीना सबरनो जाणे बांध तूट्यो तेम तेओ ऊभा थया अने तेमणे कह्युं के आ हिंदू समाज पर वार छे, आवा शब्द न चलावी लेवाय। त्यारे राहुल गांधी विफर्या अने शुं कह्युं, आखो घटनाक्रम जुओ। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान।
इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker sir, for the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed There has been just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो there was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed, violently crushed. People were put in jail, people were threatened, and I myself was attacked. सर ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है आधा आधा, ये पहले देखा नहीं हमने। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us,
anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली, और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. Hello. And that idea, Oh, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party. Which, as you can see,
is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness and ahimsa, satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता अब ने कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet, peace be upon him, said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी के प्लीज माननीय चित्र में भी सदस्य,
हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूँ सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में रिकॉर्डेड करो। 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside because of us. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो
विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। તમે જોયું એ પ્રકારે આજે પણ ધર્મના નામની રાજનીતિ સદનમાં થાય છે, દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે, પરંતુ જ્યારે રાહુલ ગાંધી શબ્દ ઉચ્ચારી રહ્યા હતા ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદો અને એનડીએના સાંસદો વિરોધ નોંધાવવા માટે વચ્ચે વચ્ચે ટીકા ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા હતા અને આખરે પ્રધાનમંત્રીને ઊભા થઈ અને હિન્દુ સમાજ માટે બોલવું પડ્યું અને રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, મોદી હિન્દુ સમાજ નથી, ભાજપ હિન્દુ સમાજ નથી, આરએસએસ હિન્દુ સમાજ નથી. અમિત શાહ, આજે અમિત શાહની પણ વાત કરીએ. અમિત શાહ પણ સદનમાં આજે બોલતા જોવા મળ્યા. તેમણે પણ ઊભા થઈ લોકસભાના સ્પીકરને કહ્યું, કેવી રીતે આવી રીતે ચાલે, સદનમાં આવું ન ચાલે, તમે એકતરફી નિયમોની વિરુદ્ધ જઈ અને તેમને રાહત આપી રહ્યા છો, તેમને એટલે કે વિપક્ષને, અમને તમે સંરક્ષિત કરો, આવું ન ચાલે. આ શબ્દો હતા અમિત શાહના. આજે આ લોકશાહીના મંદિરમાં એટલે કે લોકસભામાં કેવું ગૃહ ચાલ્યું તેની તમને ઝલક બતાવી. તમારું શું કહેવું છે, તમને શું લાગે છે? ખડગેના શબ્દોમાં જે વાત હતી, તેમની શાયરીમાં જે વાત હતી કે સમય પલટાય છે, અરીસો એના રહે છે, બસ સામે માણસ બદલાય છે, તેવું થયું છે કે કેમ? આ વિપક્ષ મજબૂત થયું છે, તેનું પરિણામ છે કે સત્તાને સાંભળવું પડે છે. નમસ્કાર. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ.